Okay. Hello everyone online, those are joining online. Welcome to the QA session. We have participants in the advanced course. I've got some questions. So, questions lately. Is it okay to live a life, live a comfortable and luxurious life, to stay at a resort? I don't like chaos at places, temple, tourist spots, etc. I do a lot of hard work at workplace, so I want to live comfortably when I'm out for vacation, people visit. Yeah, it's perfectly fine. But the question that you must ask is, how comfortable is your comfortable life? Yeah. See what happens. You organize this comfort, right? When you go out, when you're visiting. You will organize the best of resorts, booking, everything you do. Then even a small thing goes wrong. Then what happens? What happens to your holiday? What happens to your setup? Those are the tasks. So the real comfort does not come from things. The real comfort does not come from external things. The real comfort comes from within. And that is what, when we meditate, do the practices, you get that comfort from within. Unshakable comfort. And then, however, and then you can still go ahead and organize all the best things, but then you'll not be shaken when they are not there. Your happiness, your comfort is not dependent on those objects. Isn't that a good thing? Isn't that a great way to be? How to get rid of illness, how to become healthy. I do Sudarshan Kriya, yoga, meditation daily. And still, hmm, the rate at which you are adding is faster than the rate at which you are clearing. That's what it looks like, isn't it? So then probably it's good to also look into that. Look into the aspects of our lifestyle. What are we doing? And then few simple things like we saw today, no? Eating the right quantity, giving proper gap between meals, doing some exercise, physical exercise, getting adequate sleep. All this then will add on and help you to get that. And then when you do your Kriya, Kriya itself is so powerful. And yet sometimes, even when we sit for Kriya, we are sitting with so much imbalance. So these small things will add up. And then once in a while, if you want, you can always go and see a Nadi doctor. It's a good idea to check your pulse. You know, no? Art of living. First day here also, you did Nadi Pariksha. You can do some Nadi Pariksha. The pulse doctor will be able to see if there's any imbalance. And then some herbs here, there enough to take care of. मैं बहुत शिद्दत से काम करने के बाद में भी मेरा सैलरी कम है, मेरा सैलरी कब बढ़ेगा जिससे मैं अपना अपना अपनो ख्याल अपनो अपना ख्याल रख सकूं? बढ़ेगा बढ़ेगा। आप भी बढ़ोगे, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। हाँ, तो जब नौकरी करते हैं ना, कई बार हम काम ही करते रहते हैं। नौकरी में दो चीजें होती है ना, जो उन्नति के लिए दो चीजें होती है। एक तो काम बढ़िया करना, ये तो है, और दूसरा है काम बढ़िया करना माने क्या? सिर्फ दिया हुआ काम नहीं, उसमें
औरों के साथ आप कैसे काम करते हो, कैसे रहते हो, ये सब भी मायना रखता है कि नहीं, है ना, ऑफिस में जब हम करते हो। तो ये एक बात हुआ, ठीक है। ये तो आप अपना क्रिया करोगे, ध्यान करोगे और उसके साथ आप एकदम बिल्कुल निपुण हो जाओगे, काम भी अपना जल्दी जल्दी करोगे, ये तो होगा। अब दूसरा बात क्या है कि ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। ज्ञान माने विज्ञान, एक तो होता है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। तो काम करने के लिए भी हमें अपना जो विज्ञान चाहिए, उसमें भी हम आगे बढ़ते जाएं। तो ये भी एक आप देख सकते हो, ये दो करो मैं आपके साथ। हाउ टू मैनेज टाइम। अगर सब टाइम पे करने का क्या है, सब टाइम पे करने का रहा तो वैसे कुछ भी नहीं। जब टाइम पे करने का रहा तब कुछ नहीं होता, पूरा उल्टा होता है। दिन का टाइम टेबल भी बना लूं फिर भी नहीं होता। तो कैसे मैनेज करें ऑफिस वर्क प्लस घर का काम पर प्लस बाकी खुद के लिए टाइम। जवाब भी दिया है सवाल में। टाइम कहाँ जाता है, सब दोहराने से, बार बार करने पड़ने से गलतियां हो जाती है, फिर करते हो, फिर करते हो, टाइम चला जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट से अधिक सोचना है कि टाइम वेस्ट मैनेजमेंट, कोई बात नहीं, सजगता बढ़ती जाएगी। अब आप ध्यान कर रहे हो तो अपने आप वो निपुणता और स्पीड आता जाएगा। साधक जो है ना, उन्होंने ज्यादातर कई जगह पे जो आप देखोगे, जो रेगुलर साधना करते हैं, वो बताते हैं कि जीवन में टाइम रहता है, टाइम मिलता है। अगर हमें लग रहा है कि कोई अपने व्यक्ति के साथ बुरा बुरा कर रहे हैं, और जो बुरा कर रहे हैं वो लोग भी अपने ही, ऐसे समय क्या करना चाहिए, अपने ही हो तो आपके क्या करना चाहिए, देखना चाहिए जो हो रहा है वो, या जिसके साथ बुरा हो रहा है उसे संभालना चाहिए। हम्म, न्याय, न्याय अगर करना है, किसी भी सिचुएशन के लिए न्याय करना है, तो उस सिचुएशन से थोड़ा हटना पड़ेगा। आप उस सिचुएशन में अगर लगे हुए हो, आपकी भावनाएं उस सिचुएशन के साथ लगी हुई हैं, तब आप न्याय नहीं कर पाओगे। फिर जाने अनजाने में भागीदार तो होगी, यहाँ पे या वहां पे आप अपना सोच लगाओ। तो न्याय करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा हटना होगा सिचुएशन, तभी आप उसको एकदम ऑब्जेक्टिवली वो समझ पाओगे क्या करना है। कहते हैं ना कि निपुणता इसमें है कि अगर आप, गुरुदेव कहते हैं कि अगर फल तोड़ना है तो भी कैसे पत्थर मारना होगा कि फल को भी चोट न लगे, ठीक टहनी पर लगे, टहनी पर ठीक उसके डाल पे लगना चाहिए, फिर फल गिरेगा। अगर वो आप टहनी पे डालोगे तो फिर फल नहीं गिरेगा, और फल पे लग गया तो फिर फल खराब होगा। तो इसके लिए आपकी जो दृष्टि है वो बहुत साफ होना चाहिए। भावनाएं जो आती हैं वो कई बार दृष्टि को अपने धुंधला देती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो देखें थोड़ा सा, अगर उस परिस्थिति में अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा समझें। और अपने से भी बड़ा अगर प्रॉब्लम लगे तो फिर प्रार्थना, समर्पण, प्रार्थना से भी ठीक होता है बहुत कुछ। कई बार होता है कि आप उस परिस्थिति में कुछ नहीं कर पाते, चाह कर भी, तो आपकी प्रार्थना करना। कई बार कुछ ना करना भी सही होता है।
घर पे इस तरफ लो, इस तरफ आप अपना सपोर्ट दो तो उस तरफ नाराज हो जाएंगे, उस तरफ सपोर्ट दो तो इस तरफ नाराज हो जाएंगे। तब क्या करना, चुप बैठना भी एक सही तरीका होता है, उपाय होता है ना। तो कब हमें कुछ करना है, कब नहीं करना है, ये भी समझना जरूरी है। किसी किसी को देखकर भी, किसी किसी को देखकर ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक अपनापन महसूस होता है। सेम जेंडर हो तो दोस्ती हो जाती है अच्छे से, लेकिन ऑपोजिट जेंडर हो तो दिक्कत हो जाती है। इस मामले में सहजता के साथ दोस्ती या अच्छे संबंध कैसे बढ़े, लोगों के साथ कैसे जुड़े रहे। तो संबंध अनेक होते हैं, में पहले तो तय करना है कि अपने तरफ से क्या चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे रहना चाहिए। मन में कंफ्यूजन आ जाता है ना। अपने तरफ से आप क्लियर हो तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो भी क्लियर हो जाए। और इसमें दो चीजें हैं, एक तो हमारी जो अपनी भावना है, और दूसरा है समाज में हमें कैसे रहना है ना। अपनी भावनाएं जो होती है वो शुद्ध होती है, भावनाएं शुद्ध हो, मगर फिर भी समाज में जब रहना है, समाज के अपने नियम है, अपने तरीके हैं, है कि नहीं। और वो भी बनाए गए हैं कुछ कारण से। कभी कभी हम निकल पड़ते हैं एक राह पर राह कहीं और बदल जाता है। तो समाज है या परिवार है, इसमें अपने अपने रास्ते और तरीके हैं। तो अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना, फिर वो चाहे कोई भी भावना हो, और समाज के तौर तरीकों का पालन करना, यही एक कला है, इसी को कला है। तो ये कला दोनों को अपनी जगह, दोनों को अपने स्थान में इसको स्थान देना जरूरी है। ये जो समझते हैं वही फिर इस राह पर ठीक से चलता है। इसके लिए थोड़ा स्किल यूज करना पड़ेगा। तो कहीं पे आपको ये, तो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी भावनाएं कितनी मजबूत हैं। और फिर कभी कभी इस तरफ, कभी कभी उस तरफ, ये भी ठीक है। आप अपने मस्ती में रहो, आप अपने, अगर भावनाएं शुद्ध है तो आप अपने भोलेपन में रहो, सहजता में रहो। कभी ऐसे लगे कि अपने सहजता की वजह से कुछ कुछ चीजें डामाडोल हो रही है, तो उस पर ध्यान दो, उसको ठीक करो, फिर अपने मस्ती में रहो, ये भी ठीक है। कभी यहाँ कभी वहां। हाउ टू डील विद इरिटेटिंग पीपल इन प्रोफेशन, how to deal with people who do not value you despite your efforts, how to increase your respect and face value in people's eyes. There are always two sides of every coin. It's possible that just like you find some people irritating, some people might find you irritating. Yes or no? It's possible. Yes. तभी तो हमारे कोर्स में क्या है, what is the best way to move, accept people, just see what is it that is irritating you. You know, the most commonly seen thing is what, you know, that
whatever irritates a person and another person, it is commonly found that that characteristics is there in that person also. So it's a reflection. So that's what we say. People come with all aspects. And so the best path is that. Well, if you still can't do that, then close your eyes and go on. Navigate, find a way, another path, another route. But that also how long? कब तक आप अवॉइड करोगे, कब तक आप दूसरा रास्ता निकालोगे? Observe what is happening inside you. How long are we going to sit and find for our irritation, our imbalance, our problem? How long are we going to put that tag on somebody else, person, situation? That person will go away, and another person will come who will irritate you again. Many times people run away. People run away from their jobs, people run away from relationships. But is that the solution? Because where is the problem? The problem is not in the situation, the problem is in here. And that doesn't go away. So when you accept, then it gets resolved. इसी में एक in this one एक ही सेंटेंस में क्वेश्चन में हमारे सारे कोर्स पॉइंट्स आ जाते हैं नहीं. डोंट बी अ फुटबॉलर अदर्स ओपिनियन, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, सब आ जाता है. Others should accept me, others should see me as a good person. भी हो जाता. Will I get medicine seat this time? If not, what next? You tell me. If not, what next? You decide. Then this fear will also go away. Have a plan A, plan B, na? What is the problem? Life things may not just always go on the same track as we want things to be. Then what is the fun in life? If everything is given, script is given to you, and you're just going there and sitting and talking and doing things. Is there any fun in life? Nahi na. What makes life fun? Uncertainty. Everything is uncertain. And that's why it's a thriller. Life is a thriller. कुछ भी हो सकता है, कोई भी सामने आ सकता है. You plan something and something else happens, right? And the knowledge, this knowledge that we have is also for that. If everything goes on track, do you need sunny day, everything is fine? Do you need knowledge? देखेंगे. This may happen. And sometimes look back at your life. Sometimes you thought that something went wrong, and then later on you found that that was good for you. Isn't that happened? Hasn't it happened in life? Whatever you thought was not did not do well, that only was your good for you. So there is a bigger plan. It's just that अभी picture बाकी है मेरे दोस्त. So if something does not work out, something else is perhaps better thing is opening up for you. Yeah, if you want to feel a little comfortable, have a plan A, have a plan B, plan C. Yeah? Go forward. You're smart now. You're smart, you're hardworking, you're sincere. Success will be yours. Be confident. And if that is where you're meant to excel, that is bound to happen. कहाँ जाएगा बच्ची? जय गुरुदेव भैया. How to strike balance between
logic and faith. Being logical sometimes becomes an obstacle for faith in the divine. This is a story. Mullah Nasruddin once went to a spa. Mullah Nasruddin is a very special guy. He does all sorts of funny anecdotes about him, but some wisdom behind every story. So Mullah Nasruddin goes to a spa, okay, and he says, after a hard day, tough day, I want to get a good massage. So he goes, he looks up and says, I'm going to have this one special massage. So he goes there, gets the massage, gets the whole spa done, everything. Very, very happy. And then people come to him and they say, how was it, Mullah? This he says, wonderful, amazing. Okay. And then he gets up, time to leave, so he gets freshened up, wears all his clothes, and he turns and he gives a tight slap to the person who gave the treatment, the therapy. Tight slap. This person is so surprised. What happened? He doesn't understand. Spa has done so well. Mullah is so happy. Why did he slap me? And he gives him a glaring look and walks out of that spa. Now, a few days later, again Mullah goes to the spa. Now you can understand. Once he goes to the spa, he asks for the same therapist. Now this therapist is shaking. Last time I did such a good job, I got a slap. What is going to happen this time? And the therapist again, shakingly he does. And you know what happens when somebody is nervous? All sorts of mistakes happen, everything goes wrong. Okay? And this fellow says, Aaj to gaye, gone. I have made a mess. So again, Mullah gets up after the therapy, goes freshen up. And this time he comes and gives a big tip to the therapist. Big tip. This person is thoroughly confused. What is this happening? Today I know I made a mess, but here he is giving me a big tip. Last time I did so well. So he asked Mullah, what is this? I don't understand. When I gave you a great treatment, you slapped me. And then this time I did such a good job. I did such a messy job, and you're giving me a big tip. So Mullah looks at him and says, this tip is for last time. So life can be illogical at times. Life, you may be logical, but you may find things are not logical. And that is when faith helps. Because the life, sometimes in life, the cause and effect is not in the same sequence. The seed that you have sometimes sown, a bitter seed, might give fruit today. You might have sown a sweet seed today, that might bear fruit sometime later or before. It depends upon what type of seed it is. Some seeds, Gurudev says, take longer, some seed takes move faster. So life can seem illogical, disturbing, and that's when faith. Sometimes when you have to do things, you also need logic. So both has. It's like driving a bicycle. You drive the bicycle with logic, faith. Both are. Then the balance. You only say faith, 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 say everything will happen, and you do nothing and sit. If the faith is strong, it might still work. साधना सजग सहजता भी देती है और सजगता भी देती है और स्थिरता भी देती है.
पर उसके साथ हम सबसे अच्छे हैं ये भावना भी देती है। इस अहंकार भरी भावना को मन से कैसे निकालें? समर्पण। देखो, अगर ऐसा लगे कि मन में कुछ अहंकार उठ रहा है, कुछ ऐसे कुछ हो रहा है जो हमारे बस में नहीं है, तो उसे समर्पण करो, गुरु को याद करो, शक्ति जहां पे भी आप मानते हो उधर दे दो, ये मेरा नहीं है। और अगर समझ ना आए तो परिस्थिति समझा देती है। हाँ? अहंकार उठता है तो फिर ऐसी परिस्थिति आती है, जीवन एक दो दाएं तरफ बाएं तरफ देगी, तो फिर अपने आप फिर से नॉर्मल में आ जाते हैं। पर गुरु के साथ जब हम होते हैं तब इसका ख्याल हो जाता है, ये भी सहजता से छूट जाता है। हाँ, हाउ टू डील विथ इरिटेटिंग पीपल, ये हो गया ना। डन। एक और है, लास्ट। क्वेश्चन नहीं, तो अपने बारे में बताएं। अभी टाइम क्या हो गया? चलो वीडियो देखिए, ज्ञान का नॉलेज। ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहे हैं, विल टेक दैट, दिस विल डू टुमारो। हाउ मच टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? इट्स a science. We have our Vedic, VDS, Vedic Dharma Sansthan. So where research is happening, astrology. So if you look at the cosmos, scientists have studied the cosmos. They found that the relationship between different planets, the the way the rotations and the revolutions happen in this cosmos, it's all mathematical. That baffled them. It's so mathematical, so precise. And something as simple as they say the moon's rays. Did you know that the moon's rays have an impact on your mind? Yeah? You see, the moon, if not that, you might know that the moon causes impact on the water, right? In the sea, in the ocean, the tides are caused. We studied this, right? In school, we have studied the effect of the phases of the moon on the tides, on the water. Now, 70% of this body, more than 70% of this body is water. So if the moon's pull of the rays can have impact on the tides of the water, definitely it can also impact this body, the mind. So there is a premise for everything. Same way, the rays, the cosmic rays, the sun's rays, they have a particular impact on the body. It creates something. Today doctors are saying if you don't take enough sunlight, you will have a chance of becoming depressed, right? So your mind, every sun's rays has got a particular, it's got a particular nature. And this sun's rays, when it falls on different planets, they reflect and they mutate that ray in different ways. So everything in this cosmos has got an effect on us. The the gravity, the force, the attraction, the rays, everything has got a particular impact on the body, the mind, and so on. And this has been studied.
then there are equations that have been made. Astrology is a science. It's a lot of mathematics and all this is there. But then the variables are also plenty. See? So astrology is a probabilistic science, and it depends upon the calculations. Like those of you, is anyone from mathematical statistics background? So you know, right, that the more variables that you account for, and more you do calculations, the more the precision that comes. But definitely, when you are able to see the probability, you are able to conjecture that certain things have a high probability of happening at certain times. That is what centuries of research people studied the correlation through a lot of events, a lot of samples. They did this research, and that is available to us through the ancient texts. People have studied for years, like we study all this engineering and stuff. So there is some merit in it, and you people can use it to anticipate certain changes in your mind. And at this stage, the mind could go this way, and then there are ways to mitigate. There is a risk, and there is a risk mitigation plan. You know, so in life there is chaos, but there is also order. So also the cosmos, there is chaos, but there is also order. There is a system also in place. So within the chaos, you manage to the extent, and beyond that, you let go. That's it. Any other questions? No? No? Thank you all. See you all again. Those who are online.